गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जीडीपी ग्रोथ एट 7.8%। टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए। तो इंडिया का जो जीडीपी है और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो दोनों जो है बढ़ गए हैं। अगर हम जीडीपी की बात करें तो 7.8% जो है उसने ग्रोथ दिखाई है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर के लिए। ये डेटा जो है ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिवील किया है। अगर हम देखें तो अप्रैल से जून का जो क्वार्टर था, जो मतलब फर्स्ट क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें 7.8% जो है जीडीपी की ग्रोथ रही है, जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड में। क्योंकि चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है वो स्लो हुई है 6.3% पर। और अगर हम रियल जीडीपी की बात करें, रियल जीडीपी क्या होता है? जो आपका जीडीपी जिसको आपके इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया हुआ है या प्राइस लेवल से एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी होता है एक, और एक होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी को आपके प्राइस लेवल के साथ एडजस्ट किया होता है। तो रियल जीडीपी जो है वो 40.37 लाख करोड़ जो है वो हमारे फर्स्ट क्वार्टर में रहा है। इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें तो बल्कि 8% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम देखें सेक्टर वाइज तो मैन्युफैक्चरिंग जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो सेकेंड क्वार्टर जो है दो बार, मतलब दूसरी बार जो है वो बढ़ा है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग जो है वो 3.5% पे ग्रो हुआ है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है वो दिखाई है सर्विसेज सेक्टर ने, जिसमें कि शार्पेस्ट सर्ज देखने को मिला है। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो 12.2% के आसपास जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, इसमें 9.2% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अदर सर्विसेज, इसमें भी जो है 7.89% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। अगर हम देखें तो इंडिया की जो अगले क्वार्टर की ग्रोथ है वो मॉडरेट होने वाली है, क्योंकि एलनीनो का इफेक्ट हुआ है मानसून के ऊपर, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे उसका नुकसान होगा। जैसे हमने देखा कि अगस्त जो मंथ है ये 1901 के बाद सबसे ड्राइएस्ट मंथ रहा है इंडिया का। वीकनेस रही है माइनिंग आउटपुट में। एक्सपोर्ट्स स्लगिश हो गए हैं क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो एक स्लो डाउन में जा चुकी है। फिर एक मोमेंटम बन रहा है गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, जो है थोड़ा सा कमी आ रही है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को सोशल सेक्टर के ऊपर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा इलेक्शन जीतने के लिए एज़ कम्पेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर हम देखें नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में दो विंग्स होते हैं, एक होता है स्टैटिस्टिक्स और एक होता है प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। जो स्टैटिस्टिकल विंग है उसके अंदर आता है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब एनएसओ के अंदर जो है एक होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एक होता है कंप्यूटर सेंटर और एक होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। अब एनएसओ का फंक्शन क्या है? ये जीडीपी डेटा क्वार्टरली निकालता है, आईआईपी हर महीने निकालता है, ऑल इंडिया इकोनॉमिक सेंसस निकालता है, और भी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ भी लियाजनिंग करता है, ठीक है। नेशनल अकाउंट्स को भी जो है प्रिपेयर करता है, ठीक है, और पब्लिश करता है एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी देख लेते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो जीडीपी क्या है? पहले तो आपको जीडीपी को समझना पड़ेगा। जीडीपी एक मॉनेटरी मेजर है सारे फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, जो एक कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये डिमांड साइड को शो कर रहा है कि कितनी डिमांड है इकोनॉमी, कितना एक्सपेंडिचर किया है, तो उसकी वजह से हमको पता लगेगा कितनी डिमांड है इकोनॉमी में। इसको कैसे हम निकालते हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। सी क्या है इसमें? कंजम्पशन, मतलब जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है इसका, प्राइवेट इंडिविजुअल्स कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी डिमांड है प्राइवेट डिमांड। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट कितनी डिमांड है प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस की, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपनी इकोनॉमी को आगे, अपनी जो है सप्लाई को चलाने के लिए। फिर गवर्नमेंट की भी एक्सपेंडिचर जो है वो तीसरा कंपोनेंट आ जाता है कि कितनी डिमांड्स जो है गुड्स और सर्विसेज की गवर्नमेंट ने जनरेट की है। जो लास्ट आता है वो आता है कि नेट एक्सपोर्ट्स कितने हुए हैं कंट्री से, ठीक है। अब ऐसे ही जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो सप्लाई साइड को दिखा रहा है कि नेशनल इनकम जो है हमारी दिखाता है, लेकिन सप्लाई साइड से किस सेक्टर ने कितना इकोनॉमी में जो है वो कंट्रीब्यूट किया है और कौन सा सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, ये हम जीवीए से पता कर लगा पाते हैं। तो जीडीपी और जीवीए में क्या रिलेशन हुआ? जीवीए, अगर हम जीडीपी निकालना हो, हमें डिमांड पता करनी हो, तो कैसे पता लगेगा हमें कि सप्लाई कितनी है, फिर गवर्नमेंट ने टैक्स टोटल कितना कलेक्ट किया है, ठीक है, उसमें से सब्सिडी गवर्नमेंट ने कितनी दी है, तो उससे हमें एक प्लस पूरा डिमांड का पता लग जाएगा ना कि कितनी डिमांड है इकोनॉमी में। अगर टैक्सेस ज़्यादा हैं सब्सिडी से तो इसका मतलब जीडीपी जो है वो हाई रहेगा सप्लाई से, मतलब जीवीए से। और अगर सब्सिडीज़ ज़्यादा हैं, मतलब गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हुआ है, तो वो उनका माइनस में आ जाएगा बैलेंस, तो उस जो है हमारी जीवीए में से वो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए जीडीपी से वो जो जीडीपी है वो कम हो जाएगा। अब अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक, तो वो है लिक्विड एपोजी मोटर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है आदित्य L1 मिशन जो है लॉन्च होना है, तो इसरो उसमें लिक्विड एपोजी मोटर का इस्तेमाल करने वाला है, जो उन्होंने मार्स और मून के मिशंस में यूज़ की थी। अब लिक्विड एपोजी मोटर्स हैं क्या? ये स्मॉल बट पावरफुल इंजन है, इसका एक्रोनिम है लैम।
और ये सन को स्टडी करने के लिए जो है आदित्य L1 मिशन में जो है वो लॉन्च की जाने वाली है। अब ये आदित्य स्पेस क्राफ्ट को ऑर्बिटिंग फंक्शन में हेल्प करेगी, मतलब लैग्रांज पॉइंट 1 में लगाने के लिए ये लिक्विड एपोजी मोटर जो है हेल्प करने वाली है आदित्य स्पेस क्राफ्ट को। ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मैनूवर्स जो है इसी जो है इंजन के थ्रू या इसी मोटर के थ्रू ही जो है किसी भी स्पेस क्राफ्ट या किसी भी सैटेलाइट का ऑर्बिट में किया जाता है। इसको डेवलप किसने किया है? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने। अब अगर हम आदित्य L1 मिशन के बारे में देखें तो हम पिछले कई दिनों से इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि PSLV XL लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च करना है। L1 पॉइंट पर इसको रखा जाएगा ताकि कॉन्टिन्यूसली सन जो है वो व्यू कर सके ये। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जायस। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो एक अबू धाबी AI कंपनी G42 ने जायस नाम का वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड अरेबिक लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो लॉन्च किया है। जैसे ChatGPT है इंग्लिश में, वैसे ही जो है अरेबिक और इंग्लिश मॉडल जो है बाइलिंगुअल ये जायस लॉन्च किया है। और ये मैसिव डेटा सेट ऑफ टेक्स्ट और कोड के बेसिस पर बनाया गया है। कई तरह के टास्क कर सकता है, मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट समराइजेशन, क्वेश्चन आंसरिंग। और इसको किस पे ट्रेन किया गया है? कॉन्डोर गैलेक्सी, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट AI सुपर कंप्यूटर है। इसको भी ओपन सोर्स रखा गया है, मतलब इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है इसकी डेवलपमेंट में। और इसको डाउनलोड कर सकते हैं हगिंग फेस मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म से। ठीक है, अब एप्लीकेशंस क्या हैं इसके? अरेबिक स्पीकर्स को ये एक्सेसिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन देगा। एक्सटेंसिव टेक्सचुअल कंटेंट जो है न्यूज़ आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर से जो है ये डिराइव कर लेगा। ठीक है, और एजुकेशनल टूल्स जैसे कि रिस्पॉन्सिव चैटबॉट फॉर स्टूडेंट्स, रॉबस्ट कस्टमर सर्विस एप्लीकेशंस, क्लाइंट इंक्वायरीज के लिए ये सब जो है ये देने वाला है। अब अगर हम देखें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में, तो ये डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज, समराइज, ट्रांसलेट, प्रिडिक्ट या जनरेट कर सकते हैं कंटेंट को बहुत सारा डेटा सेट का इस्तेमाल करते हुए। जो पॉपुलर ChatGPT है वो सबसे आपका प्रोमिनेंट एग्जांपल है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का। और इनके कई तरह के यूजेस होते हैं, कई तरह के एप्लीकेशंस होते हैं। मतलब कि जैसे इम्प्रूव कस्टमर सर्विस देना, सर्च इंजन्स को हेल्प कर देते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कि वो डायरेक्ट ह्यूमन लाइक आंसर्स दे सकें। फिर लाइफ साइंसेज रिसर्चर्स जो हैं वो अपनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे जो है प्रोटीन्स को, मॉलिक्यूल्स को, DNA को, RNA को जो है वो स्टडी करने के लिए जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत से एप्लीकेशंस हैं, ये तो कुछ आपको थोड़े से ही बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थर्ड रेल करंट कलेक्टर। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन रेलवेज ने के कोलकाता मेट्रो ने प्लान किया है कि वो जितने भी स्टील थर्ड रेल हैं उनको कंपोजिट एल्यूमिनियम थर्ड रेल करंट कलेक्टर के साथ रिप्लेस करने वाले हैं। तो थर्ड रेल करंट कलेक्टर क्या होता है? ये बेसिकली आपके जो है ट्रेन को इलेक्ट्रिक पावर पहुंचाने का एक जरिया है। और ये इसको जो इस कंडक्टर को अलॉन्ग साइड द रेल जो है वो प्लेस किया जाता है। अभी तक कोलकाता मेट्रो रेलवे जो है वो स्टील थर्ड रेल का इस्तेमाल कर रही है पिछले 40 साल से, लेकिन अब उन्होंने जो है कहा है कि वो एल्यूमिनियम थर्ड रेल का इस्तेमाल करेंगी। और इसके बाद वो भी जो है लंदन जो है मेट्रो, मॉस्को मेट्रो, बर्लिन, म्यूनिक और इस्तांबुल मेट्रो की जो है वो श्रेणी में आ जाएंगी। अब इसका एडवांटेज क्या है? क्यों हम एल्यूमिनियम कंपोजिट का इस्तेमाल करें एज़ कम्पेयर टू स्टील? तो ऑफकोर्स जो है रेजिस्टिव करंट लॉस को जो है ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, वोल्टेज लेवल की ट्रैक्शन को इंप्रूव करेगा। मेंटेनेंस इसकी कम है, लाइफ साइकिल इसकी बहुत ज़्यादा है। ट्रेन ऑपरेशंस की एफिशिएंसी बढ़ाएगा, कार्बन फुटप्रिंट की भी जो है वो रिडक्शन करेगा क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं करेंसी चेस्ट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 केसेस फाइल किए गए हैं RBI ने क्योंकि फेक नोट्स डिस्कवर हुए हैं SBI के करेंसी चेस्ट में, कोची में, केरला में। तो करेंसी चेस्ट क्या होता है ये देख लेते हैं हम। तो RBI जहाँ पर अपनी पैसे रखता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, लोकेशन में, जहाँ से पैसा फिर बैंक्स और ATMs के पास जाता है उसको हम करेंसी चेस्ट कहते हैं। तो एक्चुअली क्या करता है RBI, खुद तो अपने ऐसा गोडाउन नहीं बनाएगा, पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिनकी कुछ जो है क्रेडिबिलिटी होती है उनको करेंसी चेस्ट बनाने को जो है कह दिया जाता है। वो उसकी जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी होती है वो तो ऑफकोर्स RBI के पास ही होती है। RBI के रिप्रेजेंटेटिव्स टाइम टू टाइम जो है इन करेंसी चेस्ट को जो है वो इंस्पेक्ट करते रहते हैं। जहाँ पे भी न्यू करेंसी नोट्स प्रिंट होते हैं RBI के, उससे वहाँ से निकल के सबसे पहले इन करेंसी चेस्ट में जाते हैं, उसके बाद जो है बैंक्स के पास, फिर ATMs के पास जाते हैं। ये बेसिकली कैश डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का काम करते हैं करेंसी चेस्ट। और ये बैंक नोट्स और रुपी कॉइन्स अदर बैंक ब्रांचेस को भी उस एरिया ऑफ ऑपरेशन में जो है वो डिलीवर कर देते हैं। RBI जो है वो आपके पुराने नोट भी जो है वो लेकर इसी करेंसी चेस्ट के थ्रू लेता है और फिर अपने पास ले जाता है। ठीक है, और
अगर बैंक के पास एक्सेस कैश बैलेंस पड़ा है तो जो एक्सेस बैलेंस है उसको भी करेंसी चेस्ट में मूव कर दिया जाता है। अब अगर हम देखें तो कैसे जो है कोई भी बैंक अब करेंसी चेस्ट बनवा सकता है आरबीआई से अप्रूवल लेके, तो अगर उनके पास एक ऐसा एरिया ऑफ द रूम है या वॉल्ट है जो कि कम से कम 1500 स्क्वायर फीट का है तो वो बना सकते हैं ऑफकोर्स उसको करेंसी चेस्ट। अगर हिली या इनएक्सेसिबल प्लेसेस हैं तो उसको एरिया को 606 स्क्वायर फीट रखा गया है। इन न्यू चेस्ट को अगर बनाना है तो प्रोसेसिंग कैपेसिटी लगभग 6.6 लाख पीसेज ऑफ बैंक नोट्स पर डे होनी चाहिए, और अगर हिली और इनएक्सेसिबल एरियाज है तो 2.1 लाख पीसेज ऑफ बैंक नोट्स भी हो सकती है। और करेंसी चेस्ट जो है वो लगभग उसका चेस्ट बैलेंस लिमिट 1000 करोड़ तक की हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट एआई स्कूल। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केरला ने रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, इसको संथीगिरी विद्या भवन स्कूल में जो है वो लॉन्च किया गया है, और इस स्कूल का जो करिकुलम है उसको नेशनल स्कूल एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन किया गया है बेस्ड अपॉन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इस स्कूल की यूनिक अप्रोच ये है कि ये स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजीज से और लर्निंग जर्नी को एनहांस करने में उनकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये एआई की कंपोनेंट्स जैसे मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा एनालिटिक्स, इन सबको एजुकेशनल जो आपके करिकुलम या फिर फैसेट्स हैं जैसे कि करिकुलम डिज़ाइन, पर्सनलाइज असेसमेंट, स्टूडेंट सपोर्ट, इन सब में इंटीग्रेट कर देगा। अगर हम देखें फीचर्स तो ये 8 से लेके 12वीं क्लास के जो है ग्रेड्स के स्टूडेंट्स को जो है हेल्प करेगा। कई तरह के जो है टीचर्स को भी हेल्प पहुँचाएगा डिफरेंट टेस्ट लेवल्स बनाने में, एप्टीट्यूड टेस्ट में, करियर प्लानिंग में, मेमोरी टेक्निक्स में, काउंसलिंग में। एकेडमिक्स के अलावा ये स्किल्स जैसे कि इंटरव्यू टेक्निक्स, ग्रुप डिस्कशन एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल प्रोग्रेस, राइटिंग फेनेसे, एटिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ये सब भी जो है स्टूडेंट्स को सिखाने में हेल्प करने वाला है। तो अब इसमें स्टूडेंट्स को जो है इक्विप किया जाएगा कि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, और स्टूडेंट्स को ये भी हेल्प दी जाएगी कि वो कैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ को टैप कर सकते हैं, उसमें भी जो है एआई हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is GDP growth at 7.8%. This topic is important for your economy section. So growth in India's GDP and the GVA has sped to 7.8% in the first quarter of this year. This data has been released by National Statistical Office. And if we look at the GDP data, then for the first quarter of this year, that is the April-June quarter, India has remained the fastest growing major economy of the world because China's GDP growth has moderated to 6.3%. We have seen that China is facing certain economic issues. For example, the real estate giant Evergrande, it has submitted bankruptcy, and it was one of the biggest real estate company of China. So anyways, so if we look at the real GDP, then it has reached a level of 40.37 lakh crore. What is real GDP and nominal GDP? Nominal GDP is not adjusted with price level, that is inflation, but real GDP is adjusted with inflation. So to make you understand in a very layman language, the 100 rupees of 1951 is not same as the 100 rupee of 2023. Okay, because we have inflation, we do not have the value of 100 rupees is not enough anymore. Okay, so but at the time of 1951, due to if we adjust it with price level, then at that time 100 rupees was more than enough for a family to sustain. Okay, so but today of course 100 rupees is not enough. So this is what price level adjustment is. So India's nominal GDP has also shown a growth of 8%. Okay, if we look at the sector wise growth, then manufacturing GVA has grew for the second quarter in a row, and agriculture, forestry and fishing GVA has grown by 3.5% in this first quarter. But the services sector has recorded the sharpest surge. The most among the services sector is the financial, real estate and professional services sector, which has grown by 12.2%. GVA from trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting has risen by 9.2%. Similarly, GVA from public administration, defense and other services has grown by 7.9% each, and from electricity, gas, water supply and other services it has grown just 2.9%, while mining and quarrying GVA has grown by 5.8%. Okay, so
but we should not be too happy because the current quarter growth would be moderated because of the effects of El Nino on the monsoon. As we have already seen that the August month has been the driest month since 1901 in India, so of course it would drastically impact the agriculture sector in India, and there is also weakness in mining output. We are also facing sluggish exports due to Chinese economy slowdown, and also larger slowdown in the global economy. There is also Lok Sabha elections building up, so of course government will not also be spending much on capital expenditure. It would rather be forced to spend on social sector expenditure. Okay, so what is National Statistical Office? So the Ministry of Statistics and Program Implementation has two wings. First is the statistics one, and the second one is the program implementation one. The statistics wing is called the National Statistical Office. So NSO consists of the Central Statistical Office, the Computer Center, and the National Sample Survey Office. And the NSO functions are that it releases quarterly GDP data on the last working day of the second month after the reporting quarter. It also releases the IIP every month. It also organizes and conducts the All India Economic Census. It also maintains licensing with other international statistical organizations. It also prepares national accounts as well as publishes annual estimates of national product, government, and private consumption expenditure, etc. So we have to understand key terminologies which have been used liberally here. First, of course, is the GDP, and the second one is GVA. So to understand GDP, so we have to know that it is a monetary measure of all final products and services, and how we arrive at GDP. So basically, we accomplish this by adding the total expenditure in the economy, and we examine how much has been spent by whom. So that's why that's how we measure the overall demand in the economy. So remember, GDP reflects the demand in the economy, and GVA is the opposite. GVA reflects supply in the economy, but the two are interconnected. Okay, I'll tell you how. Okay, first of all, we have to see how GDP growth is arrived. So it is arrived after addition of consumption, that is the private final consumption expenditure, which is the biggest engine of GDP. How much is the demand by private individuals like you and me, and after, of course, the private sector, uh, it is the major contributor of demand in the economy. Second is the private sector businesses, how much they are investing. If there is demand, only then they would be investing. Okay, so that's why the investment demand generated by private sector businesses contribute the second biggest engine to the GDP. Then, of course, is the government one, the government final consumption expenditure, which is the third engine, which basically means the demand for goods and services which has been generated by the government. Then, of course, the last one is net exports minus imports. Now, let us see what is gross value added. So, it calculates the national income from the supply side. Okay, so basically, GVA and GDP both are modes to calculate national income, and GDP calculates it from the demand side, and GVA calculates it from the supply side. So basically, we can see how much a particular sector is contributing to the economy and which sector is struggling in the economy using the GVA. Okay, like we saw above, that manufacturing sector is contributing this much, services sector has contributed the most. So how these two are interrelated? Of course, demand would be related. Demand can be seen. GDP, just consider it as demand. So total demand would be total supply plus tax. The government, whatever is the balance of government, taxes earned by the government minus subsidies by the government. Okay, so that's this. It means that if taxes are more than subsidies, of course, then the GDP will be higher. It means that demand is also being generated by the government. But if the subsidies are more and taxes are less, then of course GVA would be higher than the GDP would be lower, because the demand by private individuals is being forced. It is being lessened by the supply, or the because of negative demand from the government rather. Okay. So the next topic is liquid apogee motor. This topic is important for your science and tech section. So for Aditya L1 mission, ISRO will be using the liquid apogee motor, which is identical to the one used in Mars and Moon missions. So what is liquid apogee motor? It is a small but powerful engine, which is going by the acronym LAM, and it is meant to study the sun, of course. And
what is the use of liquid apogee motor? So basically, it would be placing the Aditya spacecraft into the halo orbit of L1 point. So these motors are used for orbital adjustment maneuvers for satellites and spacecraft in orbit, and it has been developed by the Liquid Propulsion System Center of ISRO. Okay, we already have seen many times about Aditya L1 mission, that it will be launched today, of course, at 11:20 a.m. and it will be launched by PSLV XL launch vehicle. This will be placed in L1 point, Lagrange 1 point, so that it can continuously view the sun without any occultation or eclipses. So the next topic is JIS. This topic is important for your science and tech section. So recently, a unit of Abu Dhabi AI company G42 has released JIS, that is the world's most advanced Arabic language model, and it is a bilingual Arabic English model which has been trained on a massive data set of text and code, and it can be used for a variety of tasks like machine translation, text summarization, question answering, and it has been trained on the Condor Galaxy, that is the world's largest AI supercomputer. It is also open source, which means that anyone can use it or contribute to its development, and it is also available to download on the Hugging Face machine learning platform. So what are the applications of it? Of course, it would provide information to the Arabic speakers. It would also provide extensive textual content from news articles and research papers for the use by the any user, and it will also respond to queries about text, enabling educational tools like responsive chatbot for students and also for customer services applications for client inquiries. So what are large language models? So basically the best example is ChatGPT. Okay, so these are deep learning algorithms which can recognize, summarize, translate, predict, and generate content using very large data sets. So the popular ChatGPT AI chatbot is one application of a large language model. And what are the applications of it? Of course, it has myriad of applications, but the few are discussed here. Like it can help retailers and other services provider to use large language model to provide improved customer experience. Search engines can use these large language models to provide more direct human-like answers. Life sciences researchers can also train their these large language models to understand proteins, molecules, DNA, and RNA. Okay. So the next topic is third rail current collector. This topic is important for your economy section. So Indian Railways Kolkata Metro is planning to replace steel third rail with composite aluminium third rail current collector. So what is the third rail current collector? So it is basically a means of providing electric power to a train through a conductor which is placed alongside the rails. So Kolkata Metro Railway has been using the steel third rail for the last 40 years, but now it has decided to use the composite aluminium third one. And with this upgradation, it would become a member of the elite club of London, Moscow, Berlin, Munich, and Istanbul Metro. So, what are the advantages of aluminium composite as compared to the steel one? Of course, it reduces resistive current loss and it improves traction voltage level. It reduces maintenance and life cycle cost. It also improves energy efficiency of train operations, and ultimately it also leads to reduction in carbon footprint. So the next topic is currency chest. This topic is important for your economy section. So two cases have been recently registered after RBI has detected fake notes from SBI currency chest in Kochi, Kerala. So a currency chest is basically a place where RBI stocks the money meant for banks and ATMs. So basically scheduled banks, reputed scheduled banks are authorized to establish currency chests. So RBI is the monitoring authority over it, and RBI officials routinely monitor it or inspect it to see any discrepancy over there. Okay, so you know that whenever new currency notes are printed by RBI, they do not go directly to bank. They are first delivered to these currency chests, and then these notes are delivered to banks and ATMs. Okay, so they act as cash distribution centers, and these currency chests are expected to distribute banknotes and rupee coins to other bank branches in their area of operation. So RBI takes back the soiled notes and mutilated notes from the public through these currency chests only. If the bank also has an excess cash balance, then this excess is moved to the currency chest also. Okay, so what are the guidelines for banks to set up these new currency chests? So the area of the room or vault should be at least 1500 square feet, but in hilly or inaccessible places, it can be at least 600 square feet. Apart from this, of course, new chests
should have a processing capacity of 6.6 lakh pieces of banknotes per day, but in case of hilly or inaccessible areas, 2.1 lakh pieces of banknotes per day capacity is also sufficient. But currency chest should have a chest balance limit of 1000 crore, subject to ground realities and reasonable restrictions, which are at the discretion of RBI. So the next topic is India's first AI school. This topic is important for your science and tech section. So Kerala has recently introduced India's first ever artificial intelligence school. It was launched by Santhigiri Vidya Bhavan in Thiruvananthapuram, Kerala. This school's curriculum aligns with national school accreditation standards, and it is based on the new national education policy of 2020. So the school's unique approach is that it centers on deepening students' understanding of AI and advanced technologies so as to enhance their learning journey. So it has also seamlessly integrated AI components like machine learning, natural language processing, and data analytics into various educational facets like curriculum design, personalized assessments, and student support. And it will be catering to students from 8th to 11th grade, 12th grade, and it will help the students to get support from a multitude of teachers, different test levels, aptitude tests, career planning, etc. And besides academic, it will also be nurturing the skills like interview techniques, group discussion aptitude, mathematical prowess, writing finesse, English proficiency, and emotional well-being also. So it will also be equipping the students to prepare for competitive exams like JEE, NET, CLAT, etc. And it will also be helping the students to get opportunities at esteemed foreign universities. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.